सबसे पहले अपनी क्लिप इंपोर्ट करने के बाद फ्रीज फ्रेम करें जहाँ क्लॉथ चेंज हो रहा है उसके बाद उस फ्रेम से पंथ का कटआउट निकाल लें। उस कटआउट को फॉरवर्ड कर दे जिससे फिर उस पर की फ्रेम लगे। की फ्रेम लगा के उसकी पोजीशन को एनिमेट करें जैसे आपने मूवमेंट की है रिकॉर्डिंग में लेफ्ट राइट जिस साइड से।